Precipem. अरे यार, rainfall amount in the millimeters. Example, 12 millimeter mean it rain quite a bit, right? So they will just inform you कि यार कितनी होगी, कितनी rainfall होगी. Precipem, rainfall amount in the millimeters. Example क्या है? 12 millimeter means it rained quite a bit. ये जो rain होगी वो quite होगी, quite a bit. थोड़ी बहुत होगी, थोड़ी बहुत, right? So that will be the rainfall amount in the millimeters. Means it will be rain quite a bit. But होगी तो सही कितनी भी. तो यार रेनफॉल अमाउंट इन द मिलीमीटर्स. अरे यार, रेनफॉल अमाउंट इन द मिलीमीटर्स 12 millimeters means it rain quite a bit. Rainfall amount in the millimeters कट रहा है ना यार. एग्जाम्पल क्या है? 12 millimeter means it rain quite a bit, राइट. उसके बाद में आता है प्रेशर. अरे यार कितना प्रेशर है? स्कूल का प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर, इधर का प्रेशर, उधर का प्रेशर, सबका प्रेशर है. लेकिन हमें चाहिए प्रेशर किसका? वेदर का. प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द मिलीबार्स. एग्जाम्पल 1015 MB नॉर्मल वर्सेस 980 MB स्टॉर्मी वेदर. समझ रहे हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1015 MB है, इसका मीन्स दैट विल बी द ग्रेट, मीन्स दैट विल बी द हाई, मीन्स वैल्यू अगर ज़्यादा है मीन्स नॉर्मल है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जस्ट फाइन. प्रेशर कितना है? इट्स फाइन. बट आई विल जस्ट सेइंग कि नो, दैट विल बी 980 MB. अगर 980 इसका मतलब स्टॉर्मी वेदर है, कुछ भी हो सकता है उस टाइम. हवा चल सकती है, तूफान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्रेशर है. ठीक है. फिर उसके बाद में आता है टेम सी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लो. द करंट टेम्परेचर इन द सेल्सियस एट द रिकॉर्डिंग टाइम. अभी वाला जो हमारा करंट टेम्परेचर है उसका कितना है? करंट टेम्परेचर इन द सेल्सियस, सारे की सारी सेल्सियस में. करंट टेम्परेचर इन द सेल्सियस एट द रिकॉर्डिंग टाइम कितना है वो आपको शो कर रहा है. तो टाइम इज जस्ट करंट टेम्परेचर इन द सेल्सियस एट द रिकॉर्डिंग टाइम. देन आफ्टर 21 विजिबिलिटी, हाउ फार यू कैन क्लियरली सी इन द किलोमीटर्स. कितना क्लियर आप देख सकते हो यार. हाउ फार यू कैन क्लियरली सी, हाउ फार यू कैन क्लियरली सी, हाउ फार यू कैन क्लियरली सी इन किलोमीटर्स. एग्जाम्पल 10 किलोमीटर क्लियर डे. इसका मतलब क्या है? एकदम क्लियर, इसका एकदम क्लियर डे. उसके बाद में 2 किलोमीटर्स. 2 किलोमीटर्स का मतलब क्या है? फॉगी, फॉगी है, फॉगी. ये क्या है? फॉगी है. फॉगी मतलब कुछ दिख नहीं रहा है. अरे यार कुछ नहीं दिख रहा है, विजिबल ही नहीं, विजिबल ही नहीं. 10 किलोमीटर का मतलब क्या है? अरे यार एकदम क्लियर है, एकदम विजिबल है, परफेक्टली दिख रहा है. लेकिन यार 2 किलोमीटर फॉगी, फॉगी, कुछ नहीं दिख रहा है. फॉगी, फॉगी, डॉगी, डॉगी, कुछ नहीं हो रहा है. तो फॉगी मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है. भाग जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं दिख रहा है. ठीक है. डॉग भी नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, राइट. आफ्टर देन 22 विंड DIR डिग्री. हवा की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? अरे यार, वाइंड डायरेक्शन इन द डिग्रीज 0, इसका मतलब नॉर्थ. 90 डिग्री ईस्ट. उसके बाद में अगर 180 घूम गया इसका मतलब क्या है? साउथ. और अगर 270 हो गया इसका मतलब क्या होगा? देखो 0 to 90 हुआ, राइट. 90 or 90 180 means that you have to be going on to the south. But after then if you have to be going on to the west, so you have to be going under 270 degree, right. And after then again you have to be going on to the 360 degree, means you are just come on that section, you have to be starting, that will be the point, that will be the 0 point. तो यार 0 point क्या है? 0 point is equals to नॉर्थ है, नॉर्थ है. 90 डिग्री क्या है? ईस्ट है. 180 का मतलब क्या है? वाइंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ. कि यार साउथ 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 से आ रही है. साउथ साउथ की डायरेक्शन किधर है? हवा किस तरफ है? साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ है. तो हम वाइंड डिग्री, डिग्री भी देख रहे हैं. वाइंड डिग्री, वाइंड DIR डिग्री का मतलब ये. विजिबिलिटी का मतलब कितना फार दिख रहा है. उसके बाद में विंड स्पीड किलोमीटर पर आवर. हवा की स्पीड कितनी है? एवरेज वाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, राइट. सो एवरेज वाइंड स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर. एवरेज वाइंड स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर. एग्जाम्पल 15 किलोमीटर पर आवर.
is equals to light breeze 15 kilometer per hour is equals to light breeze 15 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू लाइट ब्रीज। और अगर 50 किलोमीटर पर आवर है इसका मतलब क्या भाई, स्ट्रॉन्ग विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड है। अरे यार 15 का मतलब एक बहुत है, बहुत कम हवा है, कम है, कम है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या है, अरे वाइंड स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, वाइंड किलोमीटर पर आवर बहुत ज़्यादा है। अरे हवा की स्पीड कितनी है, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है ना। फटाफट मैं आपको रैप अप करता हूँ। राइट, यू आर लाइक अ वेदर डिटेक्टर, आप एक वेदर को डिटेक्ट करने वाले हो। राइट, तो दैट विल बी द एवरी कॉलम इज वन क्लू, एक क्लू है आपके लिए। इतना शॉर्ट कोई नहीं बताएगा। ये हर कॉलम एक क्लू है आपके लिए अबाउट द डेज वेदर बिहेव्ड, कि आपका वेदर जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, अच्छा है, बुरा है, हवा चल रही है, रेन आएगी, हीट कितनी है, मून राइज कितना है, मून सनसेट कितना है, क्या है इधर से उधर। सो इफ यू पुट ऑल द क्लूज टुगेदर and you can tell the full story of the day's weather, that will be the main conclusion of। समझ में आया आपको? इतना आसान था यार, इतना आसान था। अब उसके बाद में मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। राइट, और आई विल जस्ट रन दिस कोड, दिस विल बी द रनिंग कोड। राइट, after then this will be code will be run and this will be showing like that। after then I will just run your print df.describe। what is this? So I will just search on it, then after I will just run on it। so I will just search on it and then after I will just run on it, enter। print df.describe means just a very easy, is a pandas command that give you the quick statistical summary of your data frames numeric columns। right, you need one numeric columns, what it shows for each numeric columns। ये क्या देगा आपको, print df.describe means, तो देखो भाई गुरु, they will showing what it shows for each numeric column। so that will be just showing count, count how many non-missing values are there। so they will just showing the count, is just showing the how many non-missing values are there। after that in the main part the average value will be showing, they will just showing the average value, देखो भाई गुरु। then after when you just search mean is just the average of all the value and you have to be just divided, after that will be the total। firstly you have to just calculate all the sum and then you have to be just divided by the total sum and that will be the average value। so देखो भाई गुरु, that will be the mean, count is just how many the missing values are there। STD means the standard deviation, how spread out the numbers are, कितने ज़्यादा spread है number कितना standard, that will be the standard deviation। minimum is just the smallest value, that will be just showing the smallest value also। after then the 25% just value of the 25 percentile, that will be the lower quartile। after then the 50% is just will be the median, that will be the middle value। after then देखो भाई गुरु, after then value at the 75 percentile, that will be the upper quartile। अगर 25 percentiles है that will be the lower quartile, middle में है 50%, that will be the middle value, median। 75% value at the 75 percentile, upper quartile, and max means the largest value, that will be showing। so if your column that will be the max times had to be with the 30, 32, 29, 31, 33, the df.describe, so they will just showing the count means total will be the 5। I will just taking the 5 temperature, count means 5.0। I will just taking the mean, what are the average, 30, 32, 29, 31, 33। after then I will just taking the standard deviation means how spread out the numbers are, standard deviation 1.58। what will be the minimum temperature, 29। what are the max temperature, 33। what are the 25%, that will be the what, after 29 that will be the 30। after then the 50 will what will be the
31. After then what? 32 will be the 75%. Max 33. So by default it shows the numeric values. If you want to include object text column, use include all, right? So that will be just showing all the sample data. So I can show that will be all look like that. Okay, so that will be there, and I will just run on it, and this will be run. What? Wow! What a moment, right? So they will just count the mean. The mean is what the count. This will be the 96432. Total temperature they will just taking max temp C, minimum temp C, sun hour, U index, all the things they will just taking out. After then they will just taking the mean, standard deviation, minimum 25%, 50%, 75%, maximum, all the things they will just taking. After then this you have to just take it, and next what the thing will be happen, you have to see this will be the 9th line of the code, and this will be the 10th line of the code. I will just run on it. What is this? So I will just copy this, and after then I will just add on that section, and I will just write enter. Simple. What is this? And this will be very easy. देखो भाई matplot library. This is the Python library for making the graphs and charts. This is the Python library for making the graphs and charts. pyplot, a module inside the matplot library that has easy to use the plotting functions. Right? Matplot, that will be this will be the Python library for making the graphs and the charts. Therefore, we give pyplot a module inside the matplot library. A module inside matplot library that are easy to using the plotting the functions. As built means this is just a nickname, alias. So you don't have to be matplot library or pyplot. Every time you have to just give right plt matplot library. That will be the plt plot. Wow, what a name. After then why we use it? So it's like saying it's liking him bringing in the drawing tools for making the plots. I will call them PLT for short, right? So bringing in the drawing tools for making the plots, and I will call them PLT for short, right? So import matplot library pyplot as a PLT. What is this? Think about it. I will just give you the example also. So I will just import matplot pyplot as a PLT. X is equals to 1, 2, 3, 4. Y is equals to 10, 20, 25, 30. After then I will just write plt.plot x comma y, plt.show, that will be displayed, right? So what I will just say to you, you just see this will be, and when I will just say pyplot is just means that will you have to be easily plotting something else, right? So matplot library is just library, and you have to be just using the pyplot as a PLT, just a short form. Bringing the drawing tools, bringing the plots, you can call him the PLT for short. So I will just assign import matplot library.pyplot as a PLT.
x is equals to 1 2 3 4, y is equals to 10 20 25 30. Plt dot plot x comma y. So when I will just write plt dot plot x comma y, make a line graph. They will just make a line graph. They will just make a line graph. And when I will just write plt dot show, they will just showing the plot plt dot show, right? So when I will just consider this like this, so they will just using like this. So this will be just showing the simple line chart. So maybe you understand. So I will just added the import matplot library. So I will just import matplot library dot pyplot as a plt. So I will just run this code and this will be run successfully. After then I will just come in the next video. I will just explain you this code.